when I talk about the glow, this beautiful face just comes in front of me because she is beautiful from within and from her soul. The most celebrated playback singer of our industry. Please welcome Palak on किसी ने बताया नहीं. ब्यूटी को लेकर क्या परसेप्शन रहता था? Beauty for me is being unique. ये जज्बा of this philanthropy, was it always ingrained? जब मैंने गाना शुरू किया I was 2.5. So I understood कि ये एक हॉबी या एक प्रोफेशन नहीं है. इसके ज़रिए मैं जाने बचा सकती हूँ. अगर मुझे चुना गया है इस काम के लिए भगवान द्वारा तो आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव अ ह्यूज वेटिंग लिस्ट. 400 बच्चों से ज़्यादा है वेटिंग लिस्ट. 1500 across you've done. One moment of realization that you thought my talent can also be rewarding for my mission. कारगिल वॉर हुआ, अनाउंसमेंट हुआ था कि सोल्जर्स को फंड की ज़रूरत है. तो मैंने मम्मा से कहा कि मुझे भी कुछ करना है. फिर मैंने दुकान जाकर ये कहा कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनाती हूँ और आप प्लीज़ मेरे डोनेशन बॉक्स में कुछ पैसे डालिए. Did you ever imagine that you're going to be a part of the Guinness Book of World Records? नहीं. हम खूबसूरती को कैसे देखते हैं? हम जहाँ कहीं से भी इस खूबसूरती को परखते हैं, लेकिन उसकी अंदर का ग्लो वो हमेशा से हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे एवोल्यूशन से आता है. एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय गेस्ट्स आर हियर टू डिस्कस. वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी विजडम को यहाँ मेरे साथ शेयर करते हैं. और बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी विजडम के साथ आप सब तक मैं अपने दिल की बात पहुँचा सकूँ और आप भी अपने अंदर की कोई भी खूबसूरती को जगा सके और आप भी कह सके आई एम फॉरएवर यंग. वेलकम टू माई ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं. द ब्यूटी इज इनसाइड आउट. Hi my beautiful people, welcome back to a brand new episode of Kisi ne bataya nahi. Beauty is inside out. And thank you so much Palak for doing this because I truly mean that your time and your way of letting us know that beautiful you is not just your face, it is so much deeper within. So thank you so much for doing this for us. Thank you for such a lovely introduction. I genuinely, since the time I have known you, and I have told Palash also this, that you know, she is beautiful and that beauty is not just with her vanity. It has something very deeper. And with passage of time, when I got to know that, you know, how you are involved in things that are beyond normal circumstance or beyond a charity that you do, it is outstanding. So I would say कि मुझे पता है why you glow so much because you work for everyone with a selfless heart. I want to know that ये जज्बा of this philanthropy, was it always ingrained or it just happened because you started knowing that this is my power and passion? I feel that I've been immensely blessed to have realized this gift of emotion that I have at a very early age. जब मैंने गाना शुरू किया I was 2.5. जैसे ही गाने की जर्नी शुरू हुई वैसे ही चैरिटी फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड या समाज सेवा की जर्नी भी शुरू हो गई. आई थिंक हर कोई मुझसे रिलेट करेगा कि जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे कम प्रिविलेज्ड हों या पेन में हो, तकलीफ़ में हो, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमारी इच्छा होती है कि काश हम कुछ मदद कर दें. बट सब अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि चाह कर भी कई बार कुछ नहीं कर पाते हैं. बट आई फील दैट आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव इमोशनल किड और मैं बहुत तकलीफ़ में आ जाती थी जब मैं किसी और को तड़पते हुए देखती थी और मुझे लगता था कि कैसे भी मैं मदद कर दूँ. जब एहसास हुआ कि सिंगिंग जो एक गिफ्ट है भगवान की तरफ से, बिकॉज फैमिली में कोई भी नहीं गाता था, मम्मा के इधर भी नहीं, पापा के इधर भी नहीं. सो आई अंडरस्टूड कि ये गिफ्ट एक हॉबी या एक प्रोफेशन मेनली नहीं है. इसके ज़रिए काम किए जा सकते हैं. और फिर जर्नी जैसे आगे आगे बढ़ती गई रियलाइज़ हुआ कि इसके ज़रिए तो मैं जाने बचा सकती हूँ. So yes, I feel that the glow that you're talking about, I feel that there is an aura of blessing around me जो मैं महसूस करती हूँ. So I feel blessed, yeah. And that beauty is, you know, in your tone, it's in your reflection. Do you feel that God is always there extending his version through you to so many lives? All of us actually. I feel that God guides us at every step in our lives. And हमें लगता है कि हम कंट्रोल में है, but करवा तो वही रहे होते हैं. And जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है कि अगर मुझे चुना गया है इस काम के लिए भगवान द्वारा तो आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई हैव अ ह्यूज वेटिंग लिस्ट. मेरे पास 400 बच्चों से ज़्यादा है वेटिंग लिस्ट में. 3500 across you've done so many heart surgeries. 3572. 72. Wow. 73rd is happening tomorrow. Wow. So I feel कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिकॉज
मैं मिशन में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डोनेटिंग द अमाउंट फॉर द सर्जरीज, बट मैं डॉक्टर से खुद बात करती हूँ, हॉस्पिटल्स जाती हूँ, सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में रहती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ पहले बाद में. तो इट्स Commendable. एक्चुअली अ फीलिंग दैट आई लिव विथ. It's kind of a mission for my life. I hope it sustains. I genuinely had goosebumps knowing that your journey inspires millions. Of course, we know that you are a phenomenal singer. You've given so many hits. Thank so you. मुझे ना that was overshadowed by the kind of work that you do. That was completely overshadowed by the kind of bigger human being that you are today. And hence, in the beginning of my conversation, I wanted to touch upon this topic first because I've never read that at such a young age, your life journey can be a part of any curriculum or a syllabus. You are there in CBSE and Maharashtra State Board, Yeah. and your life is discussed and taught to the kids. Wow, my friend, that's an achievement. I call Thank this you. as an achievement because बहुत महारत, बहुत प्राइजेस हम सब अपने जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर जीते हैं, but the kind of lives that we touch is the most precious thing that we do in our lives, and I think you are Absolutely. doing a great service. Thank And you. I have absolute gratitude for you for doing that. And I want to know that was there any one moment of realization that you thought कि my skill, my talent can also be rewarding for my mission that I connect with so many lives around, as you said कि बहुत सारे underprivileged लोग हैं, मैं सिर्फ वो जरिया बनना चाहती थी. Was there a moment that was a deciding factor? There was a moment, like I told you, that I always carried that feeling inside me of being able to support underprivileged kids and people in general. कारगिल वॉर हुआ और बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे थे सोल्जर्स के लिए, बिकॉज ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था कि सोल्जर्स को फ़ंड की ज़रूरत है वहाँ पर, तो जो भी आप सपोर्ट कर सकें, एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट. तो मम्मा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती थी. आई थिंक आई वाज 5 दैट टाइम, एंड उन्होंने कहा कि सब लोग अपनी तरफ से मदद करें. मुझे अलग अलग किस्से सुनाने लगी, तो मैंने मम्मा से कहा कि मुझे भी कुछ करना है. At the age of 5? हाँ जी. मम्मा ने कहा बिल्कुल. शी ऑलवेज अलाउड मी टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू, ऑलवेज सपोर्टेड मी. एंड फिर मैंने वहाँ दुकान जाकर, ये इंदौर में हुआ, हर शॉपकीपर अंकल से कहा कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनाती हूँ और आप प्लीज़ मेरे डोनेशन बॉक्स में कुछ पैसे डालिए. Wow. एंड तब तक आई वॉजंट इवन श्योर कि इस तरह से उनकी मदद हो भी सकती है कि नहीं, बट यही एक ज़रिया था मेरे पास मदद के लिए. सो ऐसा करते करते 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए, एंड विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ And for a 5-year-old. 5-year-old girl? Exactly. My God. So that was the moment when I realized कि it is definitely a power, a superpower that I have, my voice. Yeah. और फिर जब वो थोड़ा प्रसारित हुआ, तब इंदौर का ही एक बच्चा लोकेश, जिसके दिल में 2 छेद थे, उसके पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप कारगिल सोल्जर्स के लिए आपने किया, आप हमारे बच्चे की भी अगर मदद कर सकें, बिकॉज बच्चा बहुत सीरियस था और फंड्स जुटाने में बहुत समय ऑलरेडी जा चुका था. सो पलाश केम टू मी एंड पलाश टोल्ड मी कि दीदी अगर तू उन बच्चों के लिए, उस बच्चे के लिए कर रही है, तो मैं तेरे साथ हूँ. एंड टिल टुडे आई हैव not done a single concert without him because it's our mission, and he was Wow. even younger than me. इंदौर के राजबाड़ा पर एक छोटा सा मंच हमने बनाया, वो जो ट्रॉली होती है लिटरली उसी पर, और गाना शुरू कर दिया है सोच कर कि जगह जगह गाएंगे और पैसे जमा करेंगे. बट पहले ही उस परफॉर्मेंस में 55,000 रुपीज़ कलेक्ट हुए, जो कि एग्जैक्ट एस्टिमेट था उस बच्चे की सर्जरी के लिए. एंड देन डॉक्टर देवी शेट्टी फ्रॉम बैंगलोर, मणिपाल हार्ट फाउंडेशन, ही सेड कि अगर तुम उस बच्चे के लिए इतना कर रही हो तो हम उसकी सर्जरी फ्री में कर देंगे. फिर मम्मा और मैं उस बच्चे को लेकर बैंगलोर गए. उस बच्चे की सर्जरी तो फ्री में हो गई, बट जो पैसे इकट्ठे हुए थे उसके लिए हमने न्यूज़पेपर में दिया कि अगर और कोई ज़रूरतमंद है तो आकर मिले. और पहले ही दिन 7 हार्ट पेशेंट्स आ गए. उनकी किस्मत से आगे शोज़ आते गए. एंड फॉर अ फ्यू ईयर्स आई डिडंट इवन रियलाइज दैट इज़ बिकमिंग अ मिशन ऑफ माई लाइफ. आई डिडंट इवन गिव इट a name, I didn't even form it into a foundation. बस मैं शोज़ किए जा रही थी पलाश के साथ, एंड बच्चों की सर्जरीज हुए जा रही थी, और आगे से आगे उनकी किस्मत से कॉन्सर्ट्स आ रहे थे. So it was just like a ripple effect. Yes. Wow. And you have this Palak and Palash Charitable Foundation. So it's absolutely dedicated
to raising funds for Yes. heart surgeries. Yes. From the age of 5, you started, through this power of your voice, started raising funds for so many great deeds. Do you ever feel that if I can do this, anyone else can do this? And of course, that inspires when I listen to your stories, great stories. But have you ever approached to, your friends or maybe family members, just to kind of get this network going on a bigger circle, and you've had like challenges noting that, and you just thought maybe it's just my mission, not everybody else is inclined towards it? I completely agree with you when you say that anybody can do this. And like I started by saying कि हम सबके अंदर वो भावना होती ही है कि हम मदद करें. But just because I am doing it, I am donating 100% of my concert income. I can't expect somebody else to do the same because सबके अपने priorities होते हैं. But I really hope, like you discussed, जब मुझे पता चला कि इस मिशन के बारे में टेक्स्ट बुक्स में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो my reason for excitement was this कि अगर कोई एक बच्चा भी इंस्पायर हो जाता है और अगर उस एक बच्चे ने 300 सर्जरीज भी करवा ली या 3 भी करवा ली, तो आई थिंक वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा. एंड आई कीप सेइंग दैट, आई कीप टॉकिंग अबाउट माई मिशन. आई डोंट शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आई फील कि आज के समय में, जिस समय इतनी नेगेटिविटी है आसपास, इतनी सारी बुरी खबरें हमें सुनने मिल रही है, अगर आप अच्छाई के बारे में बात करेंगे तो वो भी लोगों को इंस्पायर करेगी. आई कीप सेइंग दिस कि आप कितने भी पैसे कमा ले, जैसे कि आपने कहा था कि हम सब तमाम शोहरतें हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जी सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, बट आई फील कि जब आप किसी की मदद करते हैं एंड यू नो दैट यू आर द रीज़न बिहाइंड द स्माइल, उस सेटिस्फैक्शन, उस फीलिंग से बड़ा कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता. एंड आई फील दैट व्हेन डॉक्टर अंकल टेल्स मी कि बधाई पलक तुम्हारा, सो देयर इज दिस रिचुअल. सो हर सर्जरी के बाद देयर आर सेवरल हॉस्पिटल जहाँ पर अपनी बच्चों की सर्जरीज होती हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, टाई अप है मेरा. तो डॉक्टर अंकल मुझे कॉल करके बोलते हैं, अगर मैं वहाँ पर होती हूँ तो इन पर्सन बोलते हैं कि बधाई हो पलक तुम्हारा बच्चा बच गया. एंड that statement for me is like glucose, like electrol. It gives me all the energy, all the motivation to keep doing what I'm doing. If I have to ask you, how can we join hands with it, or how my community can join hands with it? Till 2020 मैं सिर्फ अपनी इनकम डोनेट कर रही थी, कॉन्सर्ट की इनकम. लेकिन then Salman sir told me कि why don't you involve people? There are so many people who are looking for the right place to donate at, because कई बार बहुत सारे लोग डोनेट करना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि पता नहीं पैसे सही जगह जा रहे हैं कि नहीं. So why don't you open a foundation? Then beginning of पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन happened. एंड अब अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन में they can donate. I also have my mail ID on my social media given, which is palakmuchal@gmail.com. You can reach out to me. And जब कोई डोनेट करता है तो मैं उन्हें उस बच्चे की पिक्चर और सारी डिटेल्स और लेटर वो सब भेजती हूँ, so that they know कि their money is in the right energies. And they also get the emotion, what of course, I feel. Yeah. Wow. I can feel it. So yeah, definitely. I can sense that how much greater do you feel. So Palak Muchal, Guinness Book of World Record and Limca Book of World Record. Did you ever imagine that you're going to be a part of the Guinness Book of World Record? नहीं. Guinness Book has given me a Hall of Fame for being the youngest donor in the world, and I received this when I was young. I think the youngest. And I think I was 10 years old that time. Wow. एंड लिम्का बुक में भी सेम ही चीज़ के लिए है. आई फील कि जब ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो गिनेस बुक का रिकग्निशन हो या बड़े बड़े लोगों से तारीफ़ें हो या ब्लेसिंग्स हो, आई फील assured of the fact that I'm walking on the right path. You are, my friend. You're walking on a great path, not just the right one. Thank you. See, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं. So you are beautiful from inside. That beauty just reflects in your aura. Thank you. Now coming to the basics of beauty. You tell me, what do you practice for your beautiful skin and your hair? I mean, like, you have beautiful curls, and I've complimented you earlier also that nice beautiful locks. They are like Goldilocks. हम जो अपनी कहानी में पढ़ते थे, अपने कॉमिक बुक्स में हम जो सुंदर सी लड़की देखते थे with the beautiful locks. What has been your beauty mantra when you were like growing up, or you still do, and
What do you do? So a lot of people don't know the side of me that I am quite interested in beauty, fashion, skincare, hair care. Okay, we would love And to know that. people who have curly hair, they would know कि इस तरह से जो बाल होते हैं वो ऐसे आसानी से नहीं आ जाते. sure. A lot of effort is being put behind that, but it's not like treatments या procedures. It's like you just need to know the right method. The curly girl method exists for real. Okay, okay. So बचपन से ही I had curly hair, and the first guide जो मुझे मिली थी, that was my mom, and she had a lot of knowledge on how to maintain curly hair. तो उनकी सीख से follow करते now I'm very much familiar. Now I can like quite dictate them to be the way Yeah, I and they're so want. disciplined. I mean, like every curl is setting here, दूसरा वाला इधर, जैसे ही वो आता है, पलक is like पीछे चलो. When I talk about beauty, I do not refer to the vanity part of it. Beauty for me is holistic. Beauty for me is beyond, It is, you know, skin. It's skin deep. So tell me, घर पर beauty को लेकर क्या perception रहता था? I feel that my mom has always taught me this, that beauty lies in your values, your character. And for us, it's been the most important. For me, it's been like a line when I'm walking and I can't go here or there. Till today, जब हम मुंबई शिफ्ट हो रहे थे पूरी फैमिली के साथ, मम्मा ने एक ही चीज़ मुझसे कही थी कि खुद के कैरेक्टर को इस तरह से रखना कि 10 साल के बाद when you look into the mirror, खुद को फेस कर पाओ और ख़ुद के बारे में प्राउड फील कर पाओ. एंड वही मेरी कोशिश रही है. सो आई फील कि अगर आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं कम ज़्यादा छोटे बड़े, आई फील हैविंग स्टैंडर्ड्स इन लाइफ, हैविंग वैल्यूज़ इन लाइफ इज़ वॉट मेक्स यू यूनिक. एंड आई फील दैट ब्यूटी फॉर मी इज़ बीइंग यूनिक in your own way. And I think भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है एक रीज़न से. और उस यूनिकनेस को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम भेड़ चाल में लग जाते हैं या दूसरे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं without realizing that you're not supposed to be like somebody else. You are made in your unique image, and that has to be preserved. Wonderful. Was this thought from the beginning or it evolved? That you are unique? I would say it was there from the beginning. I always knew that I had unique power, so to say. Like I said, I converted that into helping people. But yes, I think the more connected you are with yourself, and I'm sure that you relate with it because you also come from a very strong spiritual background, and you do believe in values and standards. And I've heard you speak so highly of your values, and they are when I'm listening to you, it just resonates with what ideologies. That's why I said that you'll relate with it. I feel कि जब आप खुद से aligned होते हैं, जितना आप खुद के करीब होंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्लो करेंगे. Because ultimately the meaning of spirituality for me is being connected to myself. Because जब हम सुनते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, क्यों सब महसूस नहीं कर पाते? Because बाहरी प्रभाव इतना पड़ जाता है कि आप खुद के अंदर देख ही नहीं पाते हैं. So if you're able to look inside yourself and sit alone and just hear your inner voice, I think you're in the right place. My God, this beautiful, woman has beautiful thoughts. Outstanding. Singing career, of course, the world has noticed it. The kind of progress you have achieved, the achievements you've had. Is there still a subject that you still feel that this is the area I'm not tapped through my singing? Through my singing, lots. Really? Yes. You have like a bunch of list of ये भी गा लिया, वो भी गा लिया, ये hit, वो hit. Okay, give me two such emotions or areas that you still want to experience through your singing. While I talk about spirituality and peace and all this, I'm a very restless person and a highly ambitious person. So this calmness and peace has a lot of chaos from within. Yes, and I think spirituality तभी काम आएगी अगर आप restless हैं और आप उसको काम कर पाते हैं. Otherwise, अगर already काम है तो फिर क्या ही जरूरत है? हम साधु और संत हैं, हिमालय में बैठे हुए हैं. So the music composers also who work with me, they know that I never get satisfied. When everybody in the studio is doing wow, I'm like एक और take ले सकते हैं क्या, एक और take ले सकते हैं. So that way I have so many ideas that I want to tap.
इनटू क्रिएटिवली। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी सिंगिंग जर्नी शुरू हुई, आशिकी के बाद मुझे रोमांटिक गाने सबसे ज़्यादा गाने को मिले। You have that very feel good factor in your voice. that sweet melodious thing, that identity is attached to my voice. But I have been very fortunate कि कुछ कंपोजर्स ने मुझसे एक्सपेरिमेंट भी करवाए हैं, जिसकी वजह से मैंने जुम्मे की रात है या आइसक्रीम खाऊंगी या इस तरह के गाने भी गाए हैं। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर मोर इनटू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बिकॉज जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा है। Okay. और मैं उसमें और ज़्यादा डीपली डाइव करना चाहती हूँ। I am also collaborating with some international artists. This was my next question. I was like, when will you collaborate with international artists? So something really exciting is Touch wood. in store. It will just skyrocket. I have a feeling. Okay. So हाँ, अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। In your school days, could you identify yourself different from the others? Or you had an aspiration, this friend of mine or that classmate of mine or this senior of mine is what I look forward to, and it just helped you in the journey ahead? I had so many inspirations around me. Primarily my mom. She has been my biggest inspiration. And even yesterday I was telling her that when I become a mother, I don't think I'll be able to even be like 1% of She is how you have She's been. absolute adorable, yeah. She is. I was highly inspired by Swami Vivekanand ji, Mother Teresa, Lata ji. उन्हें मैंने literally पूजा है। स्कूल में unfortunately मुझे बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि मेरा मिशन शुरू हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी और तभी से मेरा मिशन बहुत पॉपुलर हो गया था, तो लोग मुझे जानते थे। तो अगर मैं घर से बाहर निकलती थी तो इंदौर में भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। सो जब मैं स्कूल जाती थी तब इवन टीचर्स दे वुड ट्रीट मी सो स्पेशल। ऑब्वियसली खुशी भी होती थी, बट आई हैव नॉट हैड दैट नॉर्मल स्कूल गोइंग childhood. Though I have attended school, I've also been a topper. But सबसे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता था बचपन से। You have a lot of people around you. How many are there in your inner circle? So my circle is huge. You've been to my house, Yes. Mama's house now. Buzzing it is. Buzzing with positivity, smiles and laughter. Yeah. एंड घर का ऐसा एटमोसफेयर है कि आपको हर समय लोग मिलेंगे ही घर पर, और हर ओकेजन में, हर ओकेजन पे, इवन ऑन अ रेगुलर बेसिस। देयर आर सो मेनी पीपल जो स्पेशली बाहर से आए होते हैं, उनका एक टाइम का घर पे खाना फिक्स है। पलाश का हर हफ्ते में दूसरे दिन में मैसेज होता है, some gathering is happening. Super energies यार। एंड महाराज जी को पता है कि कौन क्या खाएगा, एंड वी डोंट इवन हैव टू बी एट होम। सबका घर है वो। So that way I'm always surrounded with people. I've always been, ever since I was a kid. I was a very public person because I used to go out, meet people. I spent a lot of time with politicians because my mission was such. But if you talk about friends, I don't have any friends. My husband is actually technically my first friend. Wow. Though I have people who I adore, they're very, very special to me. I'm really attached to them. But if I have to give them the definition of friend, तो उस स्पेस तक कोई पहुंचता नहीं है। Why? Till now not understood if it's a good thing or a bad thing to not have friends, but I've never had the need to have friends. मुझे हमेशा बहुत complete feel हुआ है, मुझे बहुत content feel हुआ है। बचपन से ही अगर मेरे पास थोड़ा सा भी खाली समय है तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। एंड माई फोकस ऑलवेज हैज़ बिन ऑन माई मिशन, माई सिंगिंग, माई स्टडीज़। अगर मुझे थोड़ा भी समय मिल रहा है तो मैं अपनी किताबों के साथ बैठ जाती हूँ। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट फ्रेंड्स के लिए समय ही नहीं हुआ कभी। But I like what you said, that I am so content in my space and I have so much mission in my life that I don't feel the void of having people to fill it. Yes. And I think this I'm learning now, how to embrace solitude. Trust me when I tell you this, over a period of time, I have reached to a point where I believe that having too many people does not serve the purpose of having just two people and having your own peace of mind, your own sanctity and your solitude. You just had this awakening at a very early age. But yes, we are crossing the path here. किसी ने बताया नहीं has
come up as seasons in my life. When I was going through a certain season, I wanted to speak about that. Then I was going through another season, I wanted to speak about that. Right now, I'm going through the season of beauty. Right now, I'm going through the season of evolution, of understanding that beauty is just not this. When I sit today with myself composed and I hear your stories, when I hear your experiences, I hear my guest talking about their wisdom. Oh my God, I have those wo hota na euphorias. And I just feel that maybe this is what I'm born for. I am born to have a conversation. And people like you lighten up my days, you lighten up my conversations, because if I and you can have a safe, free flowing conversation, I think everybody who's listening to us Yes. understands that how deeply we are connected. You have spoken about spirituality. Your devotion is sensed in your music, it is sensed in the kind of deeds you do. How do you see this devotion and spirituality when you have to extend the family? Are you seeking to extend your family and see that spirituality and extension in your family? I get inspired by you. Okay. I told you this Love off that. record also. I love that. I love that. Thank you. I love that. We both, like me and my husband, we have to reach that phase of our lives. Yeah. But I think we both are quite similar, like I was telling you earlier, in terms of our values, priorities in life, our preferences, and our goals. अगर आप दोनों as a unison साथ में काम करते हैं तो वो आने वाली generation के benefit में होता है. So I think as individuals, as a couple, we are very much in the right space, but we have to get there to become equipped to be able to raise a family. Yeah. Do you believe that your generational blessings or generational traumas are the ones that mold the choices in your life? I do, to some extent. Okay. Yes. Have you had a personal awakening to this concept? The first ever event in my life when I sang for the first time on stage, Chal Rahi Sajni Ab Kya Soche, was a song that I sang, and I was just 2.5 years old. And like I said, there was no Prodigy. connection from my family side with music at all. हम मारवाड़ी हैं और सभी बिजनेस में ही थे. So जब मैंने मम्मा से कहा कि मुझे स्टेज पर जाकर गाना गाना है, she was shocked. And when I sang चल रही सजनी अब क्या सोचे, everybody was shocked because 2.5 साल का बच्चा है तो कोई पोएम गाएगा या कोई आसान सा गाना गाएगा. But yeah, that was बहुत सारे लोग आसपास ऐसा बोलते हैं कि वो भगवान की देन है या पिछले जन्म का कुछ है. So conversations like these, yeah, they make me feel that maybe those blessings and those choices, they kind of follow you. Wow, absolutely. Thank you so much, Palak. When I hear you, I have so much that it resonates. I have so much that I take as an inspiration. There is so much that I'm going to go back home. I'm going to reflect on this conversation, and you've inspired me. Zyada nahi hai to I think 10 such things that I can right now pick on my fingertips, and I can just tell myself that Rubina, if she can, even you can. How So sweet. thank you so much for being that source of light in my life and in life of millions around there. We end our conversation with it's like my 30-second beauty regime. So I just want to know what Palak in her house, in her bedroom or in the kitchen does with her skincare routine. I'll ask you one question, such 5 questions, एक line में या फिर एक शब्द में, you can just let me know. Any particular skincare regime that you pick to do every single night or day? Clean my face before going to the bed. Okay. No matter what, no matter how tired I am. Necessarily not be makeup every day, but even sunscreen. That has to come off. Okay. So I think, yeah, washing my face and cleaning my face properly before I go to the bed. Do you believe in picking up one particular exercise for your beautiful face, or it's just some products that you Yoga. use? Yoga! It has to be. Yoga se hoga. Yes, yoga se yoga. So you practice it daily? Daily, yes, consistently. I also do weight training, but I feel that exercise makes a huge difference in the way your skin looks and the way you feel about your skin. One ingredient in your kitchen you vouch by
for your beautiful face. Besan. Aye, hi, you're that besan. Yeah. Oh, yeah. I love my school days. I'm besan ke liye. It's Okay. magical and it's effective Yeah, like it is. anything. One habit that has kept you in a good state of mind. Decluttering my mental space. Like a ritual every day before I go to the bed, I sit with myself and I declutter all the unnecessary thoughts or things that are not in my control, and I get them out of my system and then sleep. I'll take that. Okay, one person you are grateful to in life. Only one. Yeah, right now only one. My mom. Wonderful. One thing that you are grateful in your life. My mission. One. You think gratitude and beauty somewhere correlate? 100%. I think this is the most powerful thought. I feel that gratitude multiplies the blessings in your life, be it your physical appearance or your mental space or even manifestation of it. I mean, I just had this enlightening, awakening, and euphoric moment with you, my friend. And as I told you, हमारे पास कभी भी ऐसा मौका, ऐसा समय नहीं मिला. And I wanted to make my personal agenda that I listen to your thoughts, I listen to your wisdom, because in the first appearance to me, you came across as a very incited and a wisdom-filled human being. And I don't say it for the sake of all of this which is happening here. I host guests here whom I genuinely mean to know and explore them. And I'm a person who senses people with vibe. Conversation मेरी बाद में होती है. Correct. And I have sensed you through the frequencies and they come out amazing. You have a great aura. You're doing great service to, our society and to the humanitarian circle, I would say. Thank you so much for being this light and this source. Thank you for Thank you so having me. much. Thank you. Thank you. I really value this conversation. Really? Uh-huh. I hope I made you feel safe. Of course. I have a small token of appreciation for you. We are talking about beauty. So some salt for your bath, some how sipper for your sweet. water, and Thank it's just you. personalized. That's How it for you. sweet. Thank you, sweetheart. Thank That you. was absolute great, fulfilling conversation. Thank you so much. Thank you. With that beautiful face, beautiful note, and awakening conversation, I am bidding adieu, and let's meet in another episode of Kisi Ne Bataya Nahi, Beauty is Inside Out. Till then, keep glowing and keep growing. Thank you.